अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कासिम महमूद फ्रॉम कारनामा। सो फाइनली प्रोजेक्ट पोटोहार जो काफ़ी दिन से रुका हुआ था, तो उसको आगे बढ़ाने का टाइम आ चुका है। काफ़ी मसरूफियात के बायस इसको होल्ड किया गया था। सो रीसेंट कंडीशन गाड़ी की वर्स्ट है। सो अब जो कि सिर्फ इसी पे फोकस है और इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बस उम्मीद है कि ये काम रुके नहीं और काफ़ी डिटेल वीडियो मैं शेयर करूँगा। सो आए हम इसको अभी का लुक देखते हैं जो कि वीडियो में आगे आपको दिखाई देगा। सो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सो अभी की कंडीशन ये है जो कि बिल्कुल ही बदहाल है। सो अंदर से भी बहुत गंदी है गाड़ी, क्योंकि टाइम काफ़ी था नहीं इसलिए ध्यान दिया नहीं। ये रस्टिंग है और पूरी सफाई की ज़रूरत है। ये साइड जो कि रस्ट खा चुकी है। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है इस पर, जो कि अब पूरा थ्रू आउट इस पर काम होगा। लेट्स सी इस पर कितना टाइम हमें लगता है। प्लास्टिक इसकी बड़ी है। तो ओवरऑल रस्ट जो है वो काफ़ी बारिश में इस पर लगा है, लेकिन नेवर माइंड, अब इसको पूरी तरीके से अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है, जो कि हम साथ साथ देखते रहेंगे क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। इंटीरियर जो कि प्रीवियसली कुछ बेटर हुआ था, लेकिन अब पूरी फंडेशन की ज़रूरत है। स्टार्ट करके देखते हैं, होप के स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। चेकलाइट, हैंड ब्रेक, सो स्टार्ट करके देखते हैं। बैटरी इसकी डाउन है। आलम भाई को बोलो कलर लो, कलर भी मार देता हूँ।
नमाज पढ़ी।
व्हाट्सएप कर दी पापा को। बड़े वाले आ गए तुम। आइलिंग कर दी नीचे। बुलावा करके लाई। करके नहीं लगाई। भाई ऐसा नहीं करो, सही काम करो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।